Sushil, you speak exactly for 3 minutes and I will speak thereafter. And then again you speak. Sharad bhai, did you tell me anything? I'm so sorry, the sound here was crackling. Now, I said for you speak for exactly 3 minutes. Thereafter I will speak and then you speak again. So first thing, your spaces are 440 volts. So इतने बड़े झटके सब लोग नहीं हैंडल कर सकते हैं. You are brutally straight, which is why despite many things that you do, it's not possible to ignore you or it's not possible to stop liking you. Now next point, it's a request. The scope of this space be made larger, and maybe if you choose a wider topic debunking Adani propaganda or whatever, it might be more friendly to all as well as achieve perhaps a larger goal. I've sent you a direct message. Not want do not want to speak in those terms on the space. एक नजर मार लीजिएगा. So अरे भाई I'm देख, assuming. एक मिनट सुशील, कभी मत भूलना एक दिन मरना है. अरे मेरे जी जान बापू से यही सोच जियो के यार मैंने राजा. अरे मेरे बापू यही सोच के मैंने आधी जवानी खोई पहले और बाद में रियलाइज किया कि मरना तो साला सबको है, पर जीने और मरने के बीच में जिसने मजा ले लिया उसका मरना मरना बराबर हो गया, और जिसने मजा ही नहीं लिया तो फिर तो क्या है, मरना तो सबको ही है, जो मजा ले लिया वही खिलाड़ी. तो ले मजा ले. हाँ? वो कौन सा गाना था ना, मजा ले. ले ले मजा ले, क्या कौन सा गाना था वो? अरे जो भी है तुम हाँ. मजा ले ना यार, जो बोलने का है बोल, आज छूट है तेरे को. हाँ तो टॉपिक को एंड सी, टॉपिक को टॉपिक को नो नो सर नो, टॉपिक को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए. डिबंकिंग अडानी. नहीं 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 नहीं, आप सुनिए भाई साहब. ये जो टॉपिक है ना, वो डिबंकिंग रोहित वेब ऑफ लाइज, इट सेज इट ऑल. ओके, उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करने का है अपने को. वो लोग ने जो अडानी चलो ठीक है ना. सो आई एम अज्यूमिंग इट्स ऑल अबाउट अडानी. तो मैंने ऐसे भी रोहित की स्पेस को ज्यादा सुना नहीं था. सो टू cast aspersions on him without having had the hard work of hearing him out won't be professional, fair or human. But say broadly on Adani, देखो हिंडनबर्ग को लेके जितनी भी तीख है वो अपनी जगह पे है, और इस स्पेस की चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और कुछ लोग हर चीज में आजकल वो ना मिसोजिनिस्टिक कमेंट और वो जेंडर इनसेंसिटिव बोल देते हैं, तो मैं उसको ना जेंडर चेंज करके जेंट्स के ऊपर बना देता हूँ. ओरिजिनल ओरिजिनल कोटेशन जो है वो हमारे राजस्थानी में एक मुहावरा है वहां पे. तो विधुर वर्ड यूज करूंगा मैं, क्योंकि मेल जेंडर के बारे में कुछ भी बोलना अलाउड है, और मैं मेल हूँ. उसका प्रूफ कोई मांगने आ जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरह, वो भी दे दूंगा उसको अगर मांगेगा तो आफ्टर ट्रांसलेटिंग आफ्टर ट्रांस रेफरिंग द जेंडर, दैट ओरिजिनल कोट बिकम्स लाइक दिस. विधुर को विधुर पगे लगेगा तो विधुर क्या ले लेगा और विधुर क्या दे देगा. इसका इसका सिंपल सी भाषा में मतलब ये है कि आज भी जहां पर ये पांव लगने की रीत रिवाजें हैं घरों में, परिवारों में, तो जनरली क्या आशीर्वाद दिया जाता है? पूतो फलो दूधो नहाओ, या दूधो नहाओ पूतो फलो, या सदा सुहागन रहे. तो ये आशीर्वाद वही दे सकता है जिसके पास ये चीजें हैं जीवन में. तो जो विधुर हो चुका है वो तो दूसरे विधुर को ये आशीर्वाद दे नहीं सकता, और अगर कोई विधुर को ऐसे आशीर्वाद दे भी दिए जाए तो विधुर को कहाँ से पूतो फलेगा, कहाँ से दूधो नहाएगा और कहाँ से सदा सुहागन रहेगा. तो हिंडनबर्ग एक कबाड़िया है और अडानी दूसरा कबाड़िया है, राइट? तो नो तो सुनो, अपने अपने कबाड़े में अपने अपने तरीके से अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, ठीक? कबाड़िया सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारी है समाज का. अभी टाइम आने वाला है. नहीं 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 नहीं, आई डोंट अग्री विथ यू. हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बाहर निकाला, उसमें ही लिखा कि मैंने शॉर्ट सेल किया है बॉन्ड्स. भाई खमो तो जरा. अडानी ने तो कुछ अभी तक बोला ही नहीं है यार. सर जी, फाइनल रिबटल एंड लास्ट वर्ड विल बी योर्स.
बट मेरा तो अभी तक नहीं, मैं गाने क्या का बोलता हूँ मुखड़ा, सुशील, मेरा तो गाने का मुखड़ा भी नहीं 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 हुआ है, सुशील भाई, बट नहीं आप नहीं, बजा दिए उसको पहले ही। देखो, अरे मुखड़ा तो नहीं पूरा नहीं सुन लो सुनिए फिर आप, बजाना। एक, नहीं नहीं, अच्छा, ढाई घंटा लेट मी बूझ एक्सप्लेन मरवाया। व्हाई आई सेड दिस एंड व्हाट इट मेंट, अरे देन यू यू रिफ्यूट इट, डोंट, देन यू डिनाई इट। अरे वो तीन कबाड़िया लोग इज ने ए बहुत एक्सप्लेन किया कबाड़िया है। इज ए यूफेमिस्टिक वर्ड, वो अपना धंधा कर रहा है, ये अपना धंधा कर रहा है। हर एक आदमी के धंधे में, एनी एनी बिग बिजनेस एट स्केल, टू एज्यूम कि वो सतयुग के जमाने की रीत रिवाजों को फॉलो करके सुशील कलयुग में कोई सुशील, धंधा करेगा, सबका अपना अपना स्कोप ऑफ अरे वर्क है। 2.5 घंटा बूझ मरवा के सुना है पूरा यार, वो अच्छा, छोड़ना रोहित है के अभी पर वो भी आ लोग। जाना थोड़ा सा, आपने पहले माइक दिया मेरे को, मैंने तो छीना नहीं है, 2 मिनट सुन लो मुझे प्लीज। मैं समझ सकता नहीं हूँ, मैं 5 मिनट समझ हो गया। सकता हूँ कि आज मूछ के ऊपर डाबर का तेल लगा के आप आए हो, पेलने वाले हो सबको, पर सर जी वो थोड़ा सा और मूछ को कुरकुरा करो, एकदम पॉइंटेड बनाओ दोनों कॉर्नर को, तब तक मेरी ओपनिंग रिमार्क में फटक से कंप्लीट करता हूँ। तो दोनों का अपना अपना बिजनेस है, दोनों का अपना अपना स्कोप है, दोनों का अपना अपना गोल है, दोनों के अपने अपने नहीं प्लस नहीं, और मैं क्या माइनस है। बोलता हूँ सुशील और भाई, अगर एक सुशील भाई, मिनट बस खाली 4 लाइन में बात समाप्त कर देता हूं सर जी, आधी बात का मतलब अनर्थ निरर्थक हो जाता है। गाड़ी को रोको, कौमा, मत जाने दो, गाड़ी को रोको मत, कौमा, जाने दो, पूरा मतलब बिगड़ जाता है। कौमा लगा के 4 वर्ड बोलने दो, बात खत्म करता हूं। सो एनीबडी डिबेटिंग कि अडानी चोर है और हिंडनबर्ग दूध का धुला है, या कोई बोले हिंडनबर्ग चोर है और अडानी राष्ट्रीय संपत्ति का निर्णायक ध्वज है, तो देखो सब अपने अपने एजेंडा में लगे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो संतुलित है वो, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं भी असंतुलित निकलूं, पर मेरे को लगता है संतुलन यहाँ पे है कि मेरे को मेरा धंधा देखना है, और दूसरे दोनों धंधोड़ी है, दोनों के धंधे के अपने अपने दांव पेच है। किसी को भी एक बायस में लेके देखना समझदारी नहीं है। सबका अपना अपना जी ऑब्जेक्टिव है, वो कौन किस ऑब्जेक्टिव के साथ क्या कर रहा है। सो रिगार्डिंग द वैल्यूएशन बबल ऑफ अडानी, there is no question. Regarding the very low float, there is no question. Regarding, all kinds of overseas cross holdings exist, there is no question. अब ये क्वेश्चन, जो गलत क्वेश्चंस जो डिबेट के अंदर हल्ला मचाने के लिए रॉन्ग क्वेश्चंस ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने उठा लिए, अडानी को ही सब कुछ क्यों मिला? भाई उसने सबसे ऊंचा भाव फेंक के काम किया, टेंडर में कोई और उसको हरा नहीं पाया, उसने सारी प्रोसेस को जो भी हिसाब से मैनेज किया, उस प्राइसिंग पे लिया, ऊंचे भाव पे चीजों को लेकर के और ऊंचे भाव पे इक्विटी उठाते रहा, तो वो उसका अपना स्कैम है, उसका अपना गेम है। बट रॉन्ग क्वेश्चंस को उठाने से डिबेट डाइल्यूट हो जाती है। अब वैल्यूएशन बबल कोई स्टॉक में पहली बार नहीं हुआ है, markets have gone through सर, extreme bubbles सर in सर endless number of सर, stocks, but but ठीक है, but this kind of a बस large आप cap, ही बोल, this kind of a large cap with such low float does require investigation, more so when इंडेक्स में अब प्रभाव आ गया है, और जब इतनी बड़ी साइज हो जाती है तो इट अफेक्ट्स एवरीवन, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन इट, दोज हु आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इट, दोज हु विल नेवर ट्रेड इट एंड दोज हु रेगुलरली ट्रेड इट, सबके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, द होल मार्केट गेट्स अफेक्टेड। सो दिस हैज टू बी लुक्ड इनटू क्लियरली। और अगर अब जीएसटी की उस पर रेड पड़ रही है या कोई इनकम टैक्स वाला बुलाएगा, तो आई वुड रियली होप credibilities of all institutions have to be upheld for people to be able to completely and properly function। तो ये लिप सर्विस के लिए ये सब ना हो, कि ये दिखाने के लिए कि भैया सरकार का तो इससे कोई तात्पर्य ही नहीं है, इसीलिए इसको 4 रेड मार दो। जेन्युइन काम करते जाओ, कोई ने कबाड़ किया है, द गवर्नमेंट इज doing many good things that many prior governments did not do. I really wish and hope maturity prevails. Let's let those who should always remain respectable and in a position of authority for the people of India, so that we can work with confidence, behave with so much maturity at all steps, to not come across as manipulative. I'm not saying they are coming across as manipulative. This is one of my desires. और कहीं भी कोई हंगामा खड़ा हो, तो ये सबका दायित्व है और सबका अधिकार भी है कि चीजों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड अंटिल दे आर इन्वेस्टिगेटेड, टू पास ए जजमेंट एंड से आई एम गॉड, दैट सम पीपल कैन डू, बट दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। यूजुअली इट्स द ट्रुथ ऑल्सो, वेरी प्रोलॉन्ग सच इन्वेस्टिगेशन, तब तक पूरी कहानी स्टोरी मामला मूव ऑन कर जाता है। तो चीजों का टाइमली डिस्क्लोजर हो, टाइमली टेबुलेशन हो, and and if India is to really become that new India that we are keeping on, अरे भाई छोड़ना इंडिया इंडिया, अपना स्पेस का ये
क्या बोलते हैं, दायरा ही नहीं तो है फिर अपना रोहित के इतना बारे में बड़ा ही बात मामला है, तो करने फिर का। बॉल को आप बनाओ, बाद में अगर हमारे कुछ समझ में आएगा कि क्या हुआ उस स्पेस में, तो हम आपके साथ रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स करेंगे। बैट बड़ा परफेक्ट। आप घुमाओ, हम रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स करते हैं, फिर आपको सामने यस, प्लेयर यस, एंड पे आना पड़ा तो यस, 1-2 रन हम भी बनाएँगे। यस, आइए आप यस, आइए, ओके। मोर्चा संभालिए थैंक यू। और रोहित को भी ऊपर बुलाइए। थैंक लेट अस हैव रोहित। नहीं, नहीं, आप मत बोलिए किसको अच्छा ठीक बुलाना है, है, योर उसने चॉइस, हमको नहीं योर चॉइस। बुलाया। बॉस प्लीज़ बॉस इज डोंट। ऑलवेज राइट, एवरीवन नोज़ इट। सो टेक ओवर यस, बॉस। नहीं, मैंने पूरा स्पेस पढ़ा रोहित भाई का, अरे पढ़ा क्या, सुना। मैंने रिक्वेस्ट डाला बोलने के लिए, वो नहीं बोलने दिया, ठीक है। लगता है पेड स्पेस था, मतलब किसी ने स्पॉन्सर किया था। खुले आम, जिस तरह से वो पलक, जिसको कुछ मालूम नहीं है लॉस के बारे में, जो बात वो 4 मिनट में कर सकता था वो 1.5 घंटा लिया। एक ही बात रिपीट 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 रिपीट। बोलता है वो लोग ने इधर ठोका होगा फ्यूचर में, ऑप्शन में। अरे भाई, अलाउड ही नहीं है इधर फॉरेनर्स को बेचना विदाउट द अंडरलाइन। हाइंडनबर्ग के रिपोर्ट में खुला लिखा हुआ है कि उसने शॉर्ट सेल किया है ऑफ बॉन्ड्स विच आर लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अभी रोहित को भी नहीं मालूम, पलक को भी नहीं मालूम, वो तुलसियान को भी नहीं मालूम, इतना बेसिक चीज नहीं मालूम, और स्पेस में चले आए एक करने को। और ये चलो, आपको जो भी बोलने का था बोलो, लेकिन हमको मौका दो ना, क्योंकि आपकी फट गई थी कि फ्लैशबैक कैसा आएगा। वो मैंने आपका जो, वो क्या बोलते हैं, टाइमलाइन पे देखा, 170, 170 कमेंट्स टोटली अगेंस्ट रोहित। आई hold Rohit. I used to hold Rohit in a good stead, but with today's incident, what? There is no objectivity. अब पैसा ही सब कुछ है। वो तुलसियान, उसको रिलायंस के सामने खुन्नस है, बेफाम बोले जा रहा है, बिजनेस चैनल्स का हेड, वो अनुज को रेफर करा। व्हाट यू हैव, मतलब अपना स्पेस को ये लेवल पे क्यों लेके गया। वो दूसरा बात है देश दाज। अरे यार, शेयर बाजार में देश का बात किधर से आने लगा, कब से आने लगा। कोई शॉर्ट सेलर है तो वो क्या देशद्रोही है क्या। आई एम अ शॉर्ट सेलर, आई हैव शेयर्स। मेरे सामने कम से कम 17 FIR अभी भी जीवित है। क्या उखाड़ लिया। तो मैं अपने अडानी ठोकता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं इंडिया को बजाता हूँ। नॉनसेंस, क्या बकवास है ये सब। और वो अपोजिशन, ये वो क्या, अपना ये लेवल है शेयर बाजार का कि अपने आगे पॉलिटिक्स के ऊपर। एंड डेफिनेटली इट वाज अ पेड स्पेस, मतलब पेड इन द सेंस इट वाज अ स्पॉन्सर्ड स्पेस। आई हैव नेवर सीन रोहित सो biased, never ever in my life. I love him, but today I am shocked. और वो अब पलक जैसा, जिसको कुछ मालूम नहीं है, लॉज नहीं मालूम है, खाम खा बोलता है इतना नाम लिखा, नाम क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, बात है कि अब्रॉड में देयर वर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड लॉट्स ऑफ बेनामी accounts. Why you are not talking about it? Why are you talking about Gujarat Ambuja's market cap? अरे भाई, सुन मेरे से, 360 का भाव है ना, 10 रुपया EPS है। सीमेंट कंपनी का 36 का पी होता है क्या। अडानी ने झक मार के
कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिया 385 में, तो इसका मतलब ये कि वो 385 बेंचमार्क बन जाता है। बेंचमार्क बनता है 170, आधा होता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट about Adani Enterprise being valued at 8 lakh करोड़, सीरियसली एक मेरे को वो क्या बोलते हैं, एक सैरिडॉन का वो गोली खाना पड़ा, 8 लाख करोड़। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या? सो रूपी हैज नो वैल्यू, रूपी विल टच 500 रुपीज और। तो ये सब, मैं तो बोलता हूँ यही लोग देशद्रोही है, जो गलत गलत सब बताते हैं। मुझे तो लगता है सच्ची में इट पेन्स, इट पेन्स, व्हाई डिड रोहित डू दिस? एंड व्हाट इज रॉन्ग? अगर हिंडनबर्ग ने निकोला पे रिपोर्ट निकाला, बहुत सारा कंपनी पे निकाला, वो जायज है। He did not have an ulterior motive of politics. And also वो CS या CSF भी, उसमें आपका अकाउंट हो है ना सर, तो आप कुछ भी सौदा कर सकते हो। तो उन्होंने एक डॉक डाला कि भाई कौन सा भी ऑफिस में ये बॉन्ड लेने का नहीं। आप समझते नहीं हो कि वो तो 97% स्टॉक डाउन है। अरे भाई, क्या तू क्या बोल रहा है? स्टॉक डाउन है, ऊपर है, उसका क्लाइंट कुछ भी करने को कर सकता है। और अब्रॉड नो रेपो डब्बा ट्रेज जैसे takes place because SEBI is so strict that they have the authority to cancel the license. So ये सब जो आप सुनते हो ना कि ये बेच देगा ना, ये कुछ नहीं है। प्लेन वेनिला, आई विल सरमाइज, अडानी ने गलत काम किए हैं। उसका जो भाई है विनोद, उसका आप गूगल में स्टोरी पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। वाई इज अ साइप्रस नेशनल सेटल्ड इन दुबई, एंड I can be open to a lot of but I'll say it. Do you know the timing of total investments in Adani Group? What was the time? Anybody can tell me? Let me tell you one thing. Adani में total is a French company, and unfortunately, if you recollect that we had a plain deal with France. So that's that. Uh, it would be very bad on my part if I don't invite Rohit to clarify. Not speaking, Rohit. Yeah, fact finder. May I request you change the subject line? That's my request as a person who Okay, knows you. okay. Please. चलो.
आगे बढ़ो आगे. What do I say? I don't know where to start. I mean, but I have to tell you one thing, though, that, and this is a compliment to Sushil ji, he's got the art of speaking, I must say. Really, I have to learn that from him. He can. Don't take the risk right now. Don का mood ठीक नहीं है. Sorry, I just joined, so I've not heard anything that's happened till now. So sorry. I mean, I was giving you a genuine compliment. For your good, because you've been so kind to me, I'm still telling you, Don का mood ठीक नहीं है. Thank you very much. But आप Don के mood के हिसाब से चलो अभी, please. So, Sharad ji, what do you want me to say? Say anything you want. Whatever I heard in the spaces, almost all of it is concocted, untrue, no knowledge of regulations. So, I mean, I don't know. Numbers were completely wrong. So I don't know what to say. There's no point. I just see. I mean, there's just no point. I mean, the simple funda is that Adani Group in 2021 had a total net debt of 1,20,000 crores. At the end of FY22, they had 2,20,000 crores of net debt. And this is despite operating cash flow of some 35, 40,000 crores. So, I mean, I don't know where Mr. Tulsian got his numbers from. Seriously. And I mean, you have a guy like S&P, the guy who wrote that report in S&P was my classmate. I know him very well. He's based in Singapore. He said that it doesn't make sense for any of the banks to lend to this group, but the only reason that this group is surviving is because they have friendly banks. He wrote that in his rating report. I have never seen a rating report in my life where a rating agency actually, this is a different, this is not Fitch. People might have said, talked about Fitch. I'm referring to S&P specifically. He said over there that Adani Group has friendly banking relationships, and that's the reason why it survives. You can't write something like that unless it's so obvious and glaring. Thirdly, where did he get $10 billion from to buy ACC in Ambuja at an earnings yield of 2.5%? $10 billion, right? And it doesn't show up anywhere as his debt, as his pledge, because he's obviously taken the entire, it's a LBO, and the entire debt is sitting outside. After that, he's taken another $2-3 billion for the open offer. Then he's bought the port in Israel. Then he's doing one in Egypt. He's got one in Sri Lanka. And these are all numbers in FY23, not even in FY22 when he had 2,20,000 crores of net debt. So this is like becoming like crazy. This group has never made free cash flow in 7 years as a group, not specific companies. As a group, they haven't made free cash flow in 7 years. So, I mean, I don't know what to say. And the last point, one more point. Please allow me a quick interjection here. Free cash flow is a theoretical concoction that has been eulogized far beyond its utility. Businesses that have a growth far higher than the cash they generate need not have a free cash flow to the firm or to the shareholders and can still become very big growth multipliers. In fact, any of the stocks that have become super baggers in short periods of time, very, very, very big multiplication has happened. मोटी सी बात ये है, common sense में समझो, जिसको भूख नहीं लगती वो बुढ़ा हो गया है. So free cash flow is an overemphasized variable. I'm not at all disagreeing with the challenges this Adani story has created, the episode has created. But let's not keep bombarding everyone here with a lot of MBA first semester or second semester ideas. Let's bring it down to the level of common sense. Nothing against you, fact finder. While the fact you've kept hidden forever who you really are, and that's not a peeve, that's just a curiosity. But FCF is something I care two hoots about.
Okay, so you might, if you were a banker, you do care about a debt to equity, No, right? no, no, no. These are all. These are Okay, sir. you are Can very. you show me Let me one company in the world? let me Can give you you. show me Let me one also company give in you. the world Let with me a debt also to give Please, you a equity very please, ratio of please. 40 times? 40 fact times debt finder. to equity. Allow me to give you also a very lavish compliment नहीं, and अरे, reciprocate. please, 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 But you please. are very gifted at arguments where you deflect things with a lot of jargon, examples, definition. Bankers will care for it. This room is not full of bankers. Point one. And point two, bankers will care for it is just a very intelligent deflection. I have worked for banks, though not as a banker, but on the trading desks. But these kind of arguments will impose you on the conversation. Let's make the सुशील भाई, conversation superior. आप प्लीज सुशील भाई बोलने दो ना, जो बोलता है बाद में आप बताओ. I हाँ, फैक्ट again, फाइंडर. there is not a show. I would like Sushil Bhai to show me one company in the world where in the infrastructure space where they have a debt to equity ratio of 40 times. Don't jump to the point by displaying intellect. You don't win an argument. I was Oh, talking I'm about not displaying FCF. I intellect. was I'm talking asking you. about FCF. You deflected it to Okay. saying that bankers will care for it. चलो भाई, Most एक of the क्या है, spaces I've तुम heard लोग, you with, एक you're क्या full है. of facts. You're full of facts, but to find logic behind them is very nicely always wrapped in these deflections. So सुशील I भाई want to प्लीज, learn हाथ things from जोड़ता you, हूँ fact यार. finder. And हाथ जोड़ता हूँ आपको. हाथ अच्छा चलो, जोड़ता हूँ, मोगेम्बो छोड़ो ना यार. मोगेम्बो का परमिशन नहीं है, एकदम मैं साइलेंट में. साइलेंट. फैक्ट फाइंडर 4 मिनट बोलो. No. So anyway, my view is whatever Sushil Bhai would say. Fair enough. I talk about Target. a number of facts, and you could say that I'm just trying to throw numbers, but it's like saying when person says 20 times or 30 times debt to equity ratio, it's like saying that the Indian government has a debt to GDP of 300,000 300 or 400% thousand percent, right? To its the equity of India. I mean, I don't know what the equity of India is, but I'm just saying that it's a crazy number, and no banker would be able to really, I mean, pass it. It just doesn't. I mean, you have companies like NTPC or Power फैक्ट Grid, फाइंडर, फैक्ट फाइंडर, which फैक्ट are फाइंडर, जस्ट अ मोमेंट. Let's stick to the topic of Adani na okay. No, yaar. no. So my simple thesis is that okay. The second, so the one point is that obviously the group doesn't make free cash flow. They don't even have enough of money to pay interest, and so they borrow more loans to pay interest. That's my one point. The second point is that Timo said Hindenburg, whatever they did was completely legal. You can, yeah, I think Palak used in his article a complicated word called structured derivative, offshore instrument, SPDs or SDPs or whatever. It's nothing but ODIs, which has always been in India for the longest time. Thirdly, ODIs are offshore development instruments, which are nothing but P notes. And all brokers, international brokers, would not risk losing their license for the sake of one client. Trust me, I have been there in the industry for 20 years, and nobody would take that risk to think it's coincidental, but some of the Adani Group FIs that are being spoken about, I actually onboarded some of these guys, and we shut down the account, realizing this, the kind of trading that they were doing, and this was about 12, 13 years ago. So it's been going on for a long time. Anyway, forget about that's irrelevant. The second point is Hindenburg. eh, It's not banned by the SEC. This thing about him being not registered by the SEC is also nonsense. In fact, SEC used Hindenburg research to put their case in Nicola against Nicola, and as a result of that, they used the Hindenburg research as proof to build their case. So to say that SEC has not registered Hindenburg, SEC has banned Hindenburg, that's a bunch of lies. Thirdly, uh, institutional investors, none of them trust it. Nobody wants to buy it.
there are most of the institutional investors. Forget about the foreign institutional investors. The domestic institutional investors who are very well who know stuff on the ground. They all paid fancy salaries of 5 crores, 10 crores, 15 crores, right? And all these salaries are disclosed in the annual report, and to the AMFI, because they have to do it by regulation. And still these guys, being paid so well, decided against investing in these companies. Fourthly, what all the LIC secretaries of investment who invest, they get paid paltry salaries. Okay, I have dealt with the LIC guys. I know that there's a huge difference in the capabilities out there between LIC and the typical mutual fund and insurance company investors. But having said that, what is strange is that LIC, which is the only buyer of the stock, sold Adani Enterprises between June 2017 and September 2017. They sold 3 crore shares at 80 rupees a share. Then in 2020 onwards, they decided to buy it. I think 2021 onwards, they decided to buy it with an average price of 1,000 rupees. So if they had not sold those shares, they would have been, or rather, by selling those 3 crore shares at peak valuations, they lost a mark to market value of 10 to 12,000 crores. That's huge. You sell the shares at 80 and you buy it back again. And by the way, they sold the shares to the same parties and they bought it back from the same parties, because those are the only two parties who were dealing with the shares. LIC on one side, and the other side was the the 5 FIs that Hindenburg is talking about. I mean, it seems strange, right? And all these shares happen in blocks. So, I mean, anyway, I'll end there. No, and what about the political angle? Shortly, There is no in short. political angle. This report is too smart. If I also had the report, okay, see, I do long shot. Okay, that's what I do. I do long shot. This is a perfectly timed shot. You would have prepared the report and waited for the time to do this. And the best time to do this is when the company has to raise capital, knowing full. Why do the company, first the question is, why do the company have to raise capital? Because the bankers told them, you have to deleverage as a group. You have to get an equity because your debt to equity ratio is ridiculous. That is the reason why Adani had to dilute. No, but Palak wouldn't understand that, and Palak did not mention the flop FPO, Doesn't matter. See, and the FPO was filled up somehow or the other. Then why did he call off? see, you know, and I know how these FPOs can get filled up, right? It's costs. शरद भाई वो नया मुहावरा लिख रहा था, बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हमको, उसने चेंज करने की कोशिश की, आबरू के साथ लेकर तेरे कूचे से निकले हम, बेआबरू होके नहीं, आबरू के साथ कूचे से निकले हम. Okay, समझा नहीं. Sharad ji, So one. सर जी, किसी का पैसा और किसी की इज्जत एक साथ दोनों आप लेना चाहते हो, उसने पैसा नहीं लिया, इज्जत रखने की कोशिश की, तो क्या बुराई है? नहीं बुरा, शेयर बाजार में कोई बुराई नहीं होती है. एक ही बात चलती है, जो जीता वो सिकंदर. छोड़िए आप सब ये बात, बाकी सब लोग बंदर है ऐसा ही नहीं यार. आप बोलो फैक्ट फाइंडर. I mean, what more to say? I mean, by the way, his logic of offshore derivative instruments. If the government was really serious, and by the way, very few foreign institutional investors use offshore development instruments. Some that use it are hedge funds, but that's only, they use it temporarily. They don't use it all the time. Most of the hedge funds globally that I know of, because I used to work for a few, thing with it, they
use their direct FIIs. It just makes more sense. Sometimes they use leverage, so they go through a broker using swaps. And that has, I agree with you, fact finder become as good as totally tracked, because people cannot forget in 2009 there was such a brouhaha for the participatory notes to become totally regulated. Whichever counterparty any note is issued to, the underlying principal holders of securities, everything has to be disclosed to SEBI. It happens with a little phase lag, cannot happen at the same hour, but but ODIs ka data is much more transparent. Overseas derivative instruments ka data is far more transparent than the very obfuscated reporting on local exchanges about retail kiska hai position or institutional kiska or large investor kiska hai. That commitment of traders report in India is the most manipulated report. So ODI data is far more transparent, and that cannot escape the regulator. Nobody can dare to do it. Yeah, you're right. Absolutely right. And no, all these at the end of the day, these are investment banks and brokers. Okay, they don't make their money from. They have 100 clients. They're not going to take the risk of one Hindenburg, who might just pay them once in a year or once in 2 years to damage the entire reputation and lose. If I don't know how many of you guys recall, CSFB lost their license in India for 6 years. After that, when they came back to India, I think in 2008, they did not want to take any risks after that. Why? Because they just learned their lesson. I mean, they lost in that time frame of 6 years or 7 years when they were banned from India to do broking. They must have lost about 400-500 million dollars of revenue, which is a lot, right? And that is just broking revenue. They would have lost also investment banking revenue, and they're very large in the debt markets as well. So, I mean, nobody wants to take a risk just for the sake of one client. That client would probably pay you $200,000, and you want to risk your entire $100 million a year business? No way. It doesn't make sense. Are you through? Yeah, and I mean this. I mean, everything had holes of whatever Mr. Tulsian said. I mean, I don't even want to comment. There's no point. नहीं, अभी तुलसियान का तो वो अनुज के साथ में झगड़ा है, तो वो चिल्लम चिल्ली करता था. क्या मतलब है यार, छोड़ो. हाँ रोहित भाई बोलिए. अरे गुड इवनिंग. अरे गुड इवनिंग यार. हमारा 2.5 घंटा ऐसा पका दिया आपने. बहुत पकाया भाई. इतना भी गुस्सा मत हो. बट नहीं नहीं, अरे बॉस, आपके ऊपर गुस्सा थोड़ी हो सकता है, इरिटेट हो सकता है. हमको बोलने का मौका नहीं दिया यार, तो अरे इतना. मैं एक आई नो बट सी आई टेल यू वन थिंग व्हिच हैपेंस विद मी एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ आल्सो. मैं आपके साथ स्पेस करता हूँ तो लोग बोलते हैं आप किसके साथ बात कर रहे हो. मैं फैक्ट फाइंडर से बोलता हूँ स्पेस करूंगा तो लोग बोलेंगे कुछ भी बोलता रहता है, ढेर सारा डेटा है, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस इज अ फैक्ट. मैं इन लोग के साथ करता हूँ उसके साथ भी नेगेटिविटी है. कल मैं सुशील के साथ करूंगा तो उसमें कुछ और लोग नहीं बोलने नहीं लगेंगे. नहीं नहीं तो नहीं नहीं, फैक्ट ये है, मैं सच बोल रहा हूँ सर. नहीं, लेकिन फैक्ट ये है, सबके फैक्ट. स्पेस में आप चांस देते हो बोलने का. हाँ, इनके बट साथ दिस. में एक ही बात रिपीट 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 रिपीट, and it had taken an overtone of a political dialogue. Okay. यस आई और डिडंट वांट पॉलिटिक्स नो, बट एनीवे. नहीं सुनिए, आज तक जब से मैं आपको जानता हूँ, 2.5 साल हो गया, एक स्पेस बताओ जहाँ पे आपने वो पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया हो. जीरो. करेक्ट. सो दिस वाज वेरी ऑब्वियस. ओके, चलिए हम See, लोग का. Palak, I'll tell you, Palak never speaks politics, but I had no idea if SP would turn political. I don't even track him. I'm hearing him for नहीं so नहीं much नहीं, detail for the first time. रोहित भाई, So, आप ये स्पेस है ना, भाभी को सुनाइएगा और वो पूछना कि ये कितना बायस्ड है. but you notice I was, even after that, I was always bringing the question back to the discussion of valuation and market. So that was the main thing I wanted to get out of it. But sir, when you are holding a space, onus is on you. Yeah, how they behave. If
टुमारो अनंत आचार्य विल से निफ्टी 100 हो जाएगा, तो उसको मैं लेगा, बराबर लेगा कि 100 नहीं हो सकता है, 12,000 ऐसा हो नहीं, सकता। अभी आनंद के साथ भी मैंने एक वेबिनार किया था 2 हफ्ते। हेलो, you can hear me, fact finder? Yeah, I can hear you. Yes, we can hear you. Yes, we can hear you, Sharat bhai. And Rohit is speaking. No, No, we don't hear Rohit. रोहित भाई बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। चल तब तक अनंत तुम बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, मैं सुनने आया, आप दो बड़े लोग क्या बोल रहे हैं। अरे दो बड़ा दो दो हाथी लड़ाई कर रहे हैं, तो बीच में नहीं घास नहीं क्यों नहीं चल रहे नहीं हो यार। नहीं नहीं नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। सी, जब भी ऐसा चीज होता है ना मार्केट में, like the story of the Adani one, I always get reminded of Krishna and Shishupal. वो बुल मार्केट में आप 100 गलती कर लो, मार्केट सुनता है, मार्केट कृष्णा जैसे सुनता है। वो आपका 100th mistake is where you will get slaughtered. This is what happened. There was too much of build up in the Adani story. उसका मिलना था। अब आप इतने अनकंट्रोलेबल हो गए कि कोई आपको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। इवन द गवर्नमेंट और व्हाटएवर यू मे से, व्हाटएवर यू वांट टू से, एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, बट ही हैड बिकम टोटली अनकंट्रोलेबल. द पीएस वर बियॉन्ड, आई मीन एस्ट्रोनॉमिकल, द वैल्यूएशंस वर humongous, everything. तो उसको तो आना ही था. Everyone knew there was something wrong, but nobody was ready to bell the cat. So one man came up, one entity comes up, bells the cat, and everyone follows suit. इतने दिन जब भी अडानी खेलता था, वो खुद ही अंपायर लेकर आता था, वो खुद सारे डिसीजन उसके फेवर में होते थे और मैच जीत गया. आज आपका अपोजिट पार्टी भी अपना अंपायर लेकर आया. अब लड़ो, अब आपको हारना ही पड़ेगा. दिस इज द होल थिंग. व्हाट इज देयर? देयर इज नथिंग. ट्रूली स्पीकिंग, वो क्या पी है, क्या इस पॉलिटिकल इशू है, दैट इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड. मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. आई एम अ सिंपल नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट. चार्ट देख के अभी भी देयर सीम्स टू बी देयर इज लॉट मोर टू दिस स्टोरी. यहाँ खत्म होने वाला है नहीं. That is all that I can say. Adani can jump into below 5, I mean drop to below 500 or even lower, and that is fairly achievable by the end of this year. That is all I say. शरद साहब, मैं डॉक्टर चौहान हूँ. आज मैं भी वो दूसरा स्पेस के अंदर था. आई वाज सरप्राइज्ड कि एक जर्नलिस्ट जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा था. ही मिस्ड द पॉइंट. उसने बोला कि लिक्विडिटी किसी एक मिनट डॉक्टर साहब, हाँ, उसने आप कुछ भी बोलिएगा चलेगा, लेकिन रोहित भाई के अगेंस्ट में नहीं, रोहित भाई के अगेंस्ट नहीं बोल रहा सर मैं. बट द जर्नलिस्ट जो है वो इतना ही इज अ जर्नलिस्ट. उससे कई चीजों पे तो उसने बोला मुझे मालूम ही नहीं है सर कि क्या होता है क्या नहीं होता. उसने एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया में इतना लिक्विडिटी है. सर, लिक्विडिटी का बात करेंगे, एप्पल या गूगल का स्टॉक, एक अकेला स्टॉक ना पूरा इंडियन मार्केट के बराबर यूएस में ट्रेड होता है ऑन अ डेली बेसिस. हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं. फिर दूसरा बोलता है कि किसी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो कैसे क्रैश कर रहा है. सर, क्रैश ही वो स्टॉक करता है जिसमें लिक्विडिटी नहीं होता. मेरा बड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस है. मैं खुद का ही काम करता हूँ. आज का न्यूज़ है, निkkei एशिया ने रिपोर्ट दिया है कि अडानी का डेट जो है दैट इज 1% ऑफ इंडिया टोटल इकोनॉमी. तो उसके बावजूद अगर हम लोग नहीं इसको पंचर कर सकते तो फिर एक पता नहीं क्या बात कर रहे हैं. दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से. So right. Thank you so much. थैंक यू. Yes आशीष. शरद सर, एक सवाल सबसे पहले आपसे. आपके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है. मैं आपको 5 करोड़ रुपया का देता हूँ. आप 100 करोड़ के पोर्टफोलियो को 50 करोड़ ले आओगे क्या, ताकि आपका 45 करोड़ का लॉस हो वो मैं ले लूँ और आपका कॉस्टिंग में 5 करोड़ का फायदा हो जाए. मालूम नहीं है ये क्या अच्छा, बोल रहे ये हैं पलक तुम? ने क्या बोला कि सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाया गया, हमारे पास 100 करोड़ का शेयर है, 1000 करोड़ का शेयर है या 10,000 करोड़ का शेयर है,
5% 7% फीस में लेके कोई अपना घर थोड़ी चलाएगा। छोड़ो ना, वो कुछ भी बोला अब वो मैं सही नहीं है। बताता हूँ, हिडनबर्ग अगर लॉन्ग किया होता और लॉन्ग रिपोर्ट निकाला होता, किसी को कोई कंप्लेन नहीं। शॉर्ट किया, शॉर्ट पे रिपोर्ट निकाला, सबको कंप्लेन है। नहीं वो स्टॉक बात नहीं मार्केट है। की डिस्कशन चल रही है तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा सुनूं। बात है कि अडानी पे रिपोर्ट निकला हो, एग्जैक्टली वो बात है। अब उसने कोई भी इंडियन डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे कुछ भी वो नहीं कर सकता। उसने क्या किया होगा, या तो इसदा में गया होगा, उसने शॉर्ट सेल बॉन्ड्स किया छोड़िए होगा। ना सब, कंजेक्चर में क्यों जाना है अपने को सब। नहीं, मैकेनिज्म बता रहा हूँ सर कि बेसिकली क्या होता आइए है। सब यहाँ। अरे छोड़िए ना यार, क्या मैकेनिज्म अपने को। एक बात बताओ आशीष भाई, अपने को मैकेनिज्म समझ के क्या उखाड़ना है? आप करने वाले हो एफआई में? नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ सर, मैं केवल दोनों तरफ से ही कर तो रहा हूँ। फिर छोड़ो ना, जो चीज का मतलब नहीं है अपने लिए, अच्छा, इंडियन वो मार्केट चीज का तो के मतलब है बारे सर में अपने क्या? को। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, एट द प्राइस एट मतलब डे 1 ऑफ द न्यू सीरीज, अदानी का एवरेज एट द मनी पुट और एट द मनी कॉल, इसका रफली प्रीमियम होता है 3.8 से 5.1%। आप खोल के देख लो। इस बार क्या हुआ, जनवरी में आप एफपीओ ला रहे हो, आप ला रहे थे 3200-3300 पे, मीडिया ने इसको 5 दिन पहले रिपोर्ट कर दिया था, यानी लीकेज तो हो गई थी सिस्टम में। आप सिंपल, आप कुछ नहीं करो, आप 2 लॉट वहां पे अप्लाई करो। एक लॉट, क्योंकि आपको आधे पैसे देने हैं, आप एक लॉट फ्यूचर में बेच दो। आप थोड़े सेफ प्लेयर हो, आप आर्बिट्राज कर लो, 3000 का कॉल भेज दो जो 720 रुपए पे बिक रहा था, 3600 का भाव था। एट द टाइम ऑफ, चाहे 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, आपको रफली मार्जिन को काट के, मार्जिन के ऊपर आपका ब्याज मोटा मोटी पड़ता है साल का 26%। कौन सा आर्बिट्राजर जो सर खेलता है। सर 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 मैं क्या बोलता हूँ आशीष भाई, ये सब बातें का कोई मायना नहीं है, हो गया सब। कोई सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है सर, मैं केवल ये देख रहा हूँ कि देयर माइट बी राइट, ही माइट सर्वाइव। अगर वो सर्वाइव कर जाता है, ये लास्ट अटैक है, अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो हो सकता है डबल एक्स हो जाए। किसका अटैक है बियर यार? कार्टिल का अटैक है सर, दोनों तरफ है। अरे मैं अब पागल है क्या? मैं मंदी खेलता हूँ, मेरे लिए मैंने अटैक किया है, वो तेजी खेलता है, उसने बुल अटैक किया है। दे ट्राई टू ट्रैप शॉर्ट्स, वी ट्राई टू ट्रैप लॉन्ग्स। एक सिंपल मैकेनिज्म है। That is the छोड़ो ना। One market question I doing. have, one question I wanted to ask Sharad. Yeah, can I go ahead? श्योर Yeah. Just one thing. Okay. Hi, this is Sorry, Rajiv. can just So Rajiv, I just wanted to know. just 1 minute, Rajiv. Hey, guys, I don't know. I just want to make this clear. I don't think there's a bear cartel or a bull cartel. So stop using those words. Just to make it clear. Second point, the Indian banking system is a very safe banking system simply because the exposure is, that's my view. I've always held this view, because the exposure to the Adani group is not as big. Yes, it can wipe out 10 to 15% of net worth, but it's still okay because all these banks generate a return on equity. Hey, just give me a second. Yeah, just give me a second. I just wanted to ask one point. I mean, this I've been listening for some time. So one point I wanted to ask, that how many of you or how many of the people that you may know who are not here did actually short the stock in January first week or December? I shorted it in last week of Jan. वो तो सबको पता चल गया था ना, तब तो अरे everybody was doing it. उससे पहले वो एंडिंग डायगोनल बना के निकला था और टॉप के बाद में 2 दिन के बाद में शॉर्ट किया। वो Okay. टेक्निकली So मैंने ना, तो पूछोगे मैं अपना बताता हूँ, I just had an intuition. Let me complete. You asked a question, let the other person complete. Okay, technically अगर आप पूछोगे, there have been all indications that it will come to such a collapse. Everything was there. There is nothing new there. अरे सर, ये सब थ्योरी है। ये All थियोरी that नहीं you're है। saying is आप theory. मैं इसी प्रैक्टिकल बात कर स्पेसेस रहा हूँ, में किसने कितना शॉर्ट किया। इसी स्पेसेस में मैंने गला फाड़ के बोला अडानी एंटरप्राइजेस इज गोइंग टू कोलैप्स शॉर्ट। इसी स्पेसेस पे बोला था शरद तो भाई आपने भी। किया बेसिकली ना, you did that ना, the answer is that yes you did it. So that doesn't bring a horn on my head or नहीं, nothing मैं क्या special. बोलता हूँ, The point here is very simple. Whatever is happening, it could have been forecast, it could have been guessed, it could have been हाँ, estimated. so that is what I wanted to hear. So basically एक सेकंड सर, अभी Hang हो on, गया आपका 1 मिनट, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, so मेरा पॉइंट ये है, hang on, this is hang not on. एक सेकंड going प्लीज। anywhere.
Hang on, पूरी बात सुन लो. There, see, अरे यार, you answered the market question is that we such. wanted to know. Let Please me wait. complete. Let me complete. Market is such that we are always looking for opportunities. People who are bearish will look for bearish Sarji, I'm saying opportunities. what all you are saying is all theory. We just needed a one simple. So I just wanted to share one point. Okay, one point. January first week में मुझे लगा कि ये फटने वाला है. And actually I tried buying puts 3 times. Okay, you want to show off 3500 that puts, लेकिन मेरे you को want मिला to नहीं, show तो मैं off कर that नहीं आपको पाया लगा basically. है. That's what I just You wanted to say. you you I just you wanted to know wanted how many of you were you actually wanted lucky to to show buy off the that puts and आपको got लगा this है. run. You wanted to show off that आपको ऐसा लगा है. You wanted to put your point. Fine, you could have said that. I अरे want मैं to तो reiterate एक्सपीरियंस my बात कर point. रहा हूँ ना, मैं थ्योरी नहीं बता Rajiv, सकता. can I ask you tell you one thing? Just to let you know, Adani was doing a roadshow with institutional investors for the last 3 months. Okay, so any institutional investor they would have met, most of the long only investors would have said we are not going to buy it because we can't hedge ourselves. The only people who would have tried to say okay fine we will consider it would be hedge funds. So they would have already built their positions, short positions, in anticipation this offering comes, because this happens many times in a lot of OFSs where the managements go around, meet investors. आपने शॉर्ट किया था फैक्ट फाइंडर? डिड यू I शॉर्ट don't इट? I don't need to answer you whether I shorted it or not shorted. That's immaterial. तो फिर क्या फायदा है ये सब No, बोलने no, का? sir. Okay, if you let me finish answering the question. Okay, I mean, आप होते I कौन have हो यार ये removed him. पूछने वाले? नहीं, I have removed him. He was an asshole. वो छोड़ो उसको यार. MM बोलिए. Hi, folks. Very good evening or good night, wherever you are in terms of discussing this problem. But since Rohit is here, it's just well timed. I was listening into the previous space, and thank you, Sharad sir, for organizing this. I just wanted to say, where was your heart when you were organizing that space and where people were going on record, and it is a recorded space, that one too, of what their positioning on all of this was? Because I just felt that you guys had just deployed a few people to spread the good word and brush everything under the carpet. I think it's only fair that the truth comes out, and it's a disgrace that our internal agencies and institutions feels compromised at this point, but also the investor confidence from the foreign market seems to be a bit of a dabble here. And all of this can be corroborated by the fact that there is a stoic silence and delayed inaction, just to prove the guilt. And you guys are just giving more air to that point there that I was trying to say. Instead of coming out clean and just owning up and just saying that there is a real problem and that there should be ample time. At the end of the day, it's a business, okay? So whether it's being done by exacting standards or whether it's being done by some ulterior motive or sinister motives, that needs to be investigated. But the whole point of this is that it just boils down to three aspects that no one talked about: accounting fraud, or the market price manipulation, or the institutional corruption, which is at the heart of this problem here. And I feel that they are at an advantage here because of the political proximity that they enjoy. No one talked about that, or at least there seems to be a hesitance from the team. I would have really respected that space if they had come out with even 1 second of acknowledgement on this particular problem. And I think that at the heart of it is, I can go into the details, I can probably surgery this or go into the depth of everything, but I don't want to, because I don't want to take up time from 1,000 people just for them to indulge in hubris, because I don't want to show off my financial So, intelligence here. But at the नहीं same नहीं time, there नहीं, needs to 5 be no, some. मिनट बोलो. अब 5 मिनट no, but बोलो. no, no, but can I No, respond to no, you? hang on. I will come to Is it. it? In fact, I'm not one of the person who just talks and doesn't let the other person talk. I'm going to stop in a minute. But what I'm trying to say is that, Okay, uh, sure. as a Hmm, bare minimum, if you had come out clean hmm, and had said that this is what the hmm, Indian markets need to respond to, this is what the government needs to respond to, and this is what businessmen hmm, of Adani and his ilk need to respond to, I would have gone away a happy person. hmm, But the fact that you guys were brushing hmm. everything on the carpet seems to suggest that you're just probably giving more air to this kind of rampant corruption by which India. This is not the first time that it's happened in India, guys. Let's not be that naive, okay?
But the fact that this has happened at this kind of volume and scale, and it continues to happen despite all of the bits in the please go on mute, please. You're a bit noisy on the other end. Please go on mute. The fact that this has come out several times in the press. None of this is new information, and I'm not giving two hoots to an international agency trying to raise this concern. But the fact that this has gone on for such a long time, right under the nose of the agencies, and yet they, kind of applaud themselves to be one of the best, is a bit of a concern. And that is what you guys should have called out if your heart was in the right place. I'm sorry, that was not the case. Your response, please. No, investigation will be done and the report will be out in 9 years. Just 9 years. Thank you. Rohit bhai. Yeah, see, all her points are valid. And we did mention, I think in the end, I tried to summarize what I would expect from the agencies. Second, uh, uh, sometimes we know less about certain people. For example, I'll tell you, Palak is one of the least spoken people. He's one of the worst speakers. Okay, this is also a recorded space, by the way. So I mean, when I say worst, I mean, what I mean to say is that he's not as loud as everybody. But you may also know written a book which is called The Market Mafia. He's essentially been behind trying to call out institutions like NSE, SEBI, all of them, all the top people. If you've actually seen his book, he's not the one who backs off from doing that. In fact, he's an investigative journalist who actually goes and does that. He has to take the rap from all the agencies for opening his mouth, and he has to think twice. Now, abhi main ye bhi bolu. In that space, even his editor from Business Line, he's a senior editor. His bosses were there, and he's wondering whether tomorrow morning, whether what questions will come up based on this. So to think that he's someone who doesn't ask the agencies questions is, in fact, the whole point of his coming out with this report is to ask the agencies, why aren't they digging deeper? Why aren't they really going into this? That is the whole point. Why are we looking at only one side of the story? Why isn't something else coming out? Why isn't anybody speaking? Aren't all the corporates in India speaking? Why aren't the regulators speaking? Somebody's got to speak. So I am completely with you, and that was the whole point of this. The angle, people may not have liked the angle that we are justifying the Adani case, and I'll tell you why it sounds like that is because all the spaces from 25th of January till today are only about negative Adani. And I also mentioned right at the beginning, if you really heard my initial half an hour, that if you asked me in December, I would have said exactly the same thing. In fact, I've been on this space with Sharad and talked about Adani being too expensive and all that, blah, blah, blah. So all that is done and dusted. There was someone earlier asking about buying, whether you shorted or not. I bought puts of Adani in December and lost money. Sharadji told me January maybe lay low, but I didn't do it. So frankly, I didn't benefit from it. I have never owned an Adani stock on delivery side, long side ever. I have no interest. I have not been paid for this space. So all these are misjudgments and wrong notions because you don't know the background. Okay, so but the point is, why if you can't ask questions on the one side of the Adani story, why can't you ask questions on the other side of the story? You ask questions about why you didn't allow us to ask questions and said time up. वो एक ही बात सर 3 घंटा हो गया था, अभी तक गए. अरे पर आप बोलते ही रहोगे, एक का बात कुछ तो सवाल बहुत थे सर, सवाल बहुत थे, and we wanted to say what we wanted to say. That is why it's a space. आप अगर सच बोलते होते तो उतना सवाल नहीं होता. आप जो कर्टन डाल रहे थे सबके ऊपर, उसके वजह से शायद से इतना सवाल था. If you had been on the half an hour or whatever, if you had continuously reminded those two people, I can't even remember their name anymore, but those two people who were speaking, then इतना सवाल नहीं होता शायद से. Yeah, maybe I guess some of it has gone the wrong way, but our hope is only that that more is done in this than has already been done. It's too quiet for me. According to me, it is too quiet. If it is so quiet, then either it is nothing or it is something else. But it should come out. Somebody's got to speak, and nobody's speaking. If this spaces results in somebody speaking, I think our job is even done, even in the right way or the wrong way.
how Rohit bhai? And कैसा? Sharad sir, just 30 seconds, if हाँ, I may, please. 30 seconds. yeah, please do. See, this is your opportunity to probably come out clean. And I'm not saying that you have to take a holier than thou kind of a statement. You can be siding either side. But there are so many powerful agencies out there and this powerful nexus going on where it is almost impossible to either criticize because of fear of, what the ramifications might be. And here you are doing a service where you have about 1,000 people who are logged in, some of them apprehensive of what's going to happen in the future. And here you have the one. I mean, where are your ethics, man? Where are your kind of, where are you? Where are you thinking that you're No, taking but the? right now it is both Listen, ways, na? please Everything is don't counter. unknown. Please, I don't like Everything it. is unknown. Please don't Eh, counter. You'll get your chance when you have the opportunity to come out clean, or at least you don't know, okay, you don't know what you don't know, so you leave it to speculation and therefore you don't take a stand. But what I heard in that space was you were taking a stand, which for me is ethically wrong. And for something to be going in public domain so long undetected, how could you even support that? You're basically giving out false hopes to people. They're still waiting, that this might just bounce back. If you've listened to the experts, and don't do it this by committee, but also think by doing it by individuals. If you've listened to the experts, if you've done your homework, you know that the the price evaluation is completely faulty, that it shouldn't be bouncing between 1,000 and 2,000 or swing either ways. It should probably be in the range of 500 and 600, and you provide your justifications as to why you're doing it. If you're such a market expert, you're not there to gather crowds or pull crowds, or try to increase your kind of clout or whatever. You're there to give proper information, and that is the ethics is what I'm questioning. I'm sorry, I'm being very direct and scathing in my remarks here, but I really can't stand what is going on in the name of Adani, and in the name of this political cover that we're trying to hide here. Your response, please. No, so see, political I cover want to has jump in for been just there. one line. Yeah, MM yeah. Zindabad. Please do. MM Zindabad. Yeah, Sushil, please do. Yeah, yeah. No, see, political angle has been there for so many corporates. This one has come out the loudest. I mean, if we talk of Reliance Industries today, it will be one of our greatest institutions in this country. But 20 years ago, it has been scathed with all Now kinds you of. are explaining. Now you are explaining the reason why you spoke about politics. That's no Why is reason, यार. वो छोड़ो ना. बोल दो हाँ तो गलती हो गया. छोड़ दो ना. नहीं तो नहीं गलती नहीं मतलब ये पॉलिटिकल एंगल इसमें है ये है वो सबसे क्या करना है हाँ वही तो एग्जैक्टली ना उसके. क्योंकि वो तो चलता ही रहता है हर कंट्री में फाइनली यू वांट टू नो नहीं वेदर नहीं द थिंग इज फंडिंग का बात फंडामेंटली नहीं राइट है. स्पेस का बात है. हाँ तो फाइनली इट शुड बी अबाउट फंडामेंटल्स सो देयर वर टू डिस्कशंस इन द स्पेस वन वाज दैट देयर इज अ शॉर्ट केस दैट इज नॉट इन्वेस्टिगेटेड व्हिच नहीं इज फैक्ट सो देयर रोहित भाई. इज I नथिंग टू will डिस्प्यूट listen ओवर to देयर I will listen to you for 20 hours if you talk of the markets. But if या you talk of politics, I won't listen to you for 1 minute only because that यू is not your शुडंट domain. है ही नहीं बिल्कुल आई एग्री So I'm saying it would be worthwhile if we just say कि चलो भाई हो गया. वो तुलसियान वो सब बोल के गया, फालतू का बोल के गया, छोड़ देते ना. ठीक है हाँ हाँ मैडम बोलिए. Sorry, Sharad ji, now you can change the subject line, please. बट मैं एक चीज बोलूंगा कि ठीक है फंडामेंटल इसने तुलसियान ने सब पॉजिटिव बोला आज तक रिसर्च रिपोर्ट किसी ने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है ओके तो वो तो लिखो हम Rohit, लोग सी nobody wants किसी to even cover this जस्ट टू now. पॉइंट आउट नो रोहित, आपको मैं बताती हूँ नेगेटिविटी क्या नहीं है. और नहीं आप रिपोर्ट लिखो ना ये लोग ने लिखा है अरे पलक बाबा ने लिखा है, और हाँ, आपने हाँ, सब जगह पे देखा भी होगा. आपने रिसर्च नहीं किया. You haven't done your homework. That's what it just reveals. And whoever were the experts that you got on your panel, they might not have done the homework. If you have okay searched long enough, you would probably get what experts have said on this case. Yes, one thing is not sure. It's the investigation is not through, and it has not been proven as yet. And hence, I would hesitate to say anything out publicly,
except that I would caveat those statements and say that this is what I feel and these are my logical conclusions based on X, Y, Z. इतना तो public domain में भी है. आप और मैं, it will take about 15-minute Google search to do that. How do you Google, madam? सिखाओ ना मेरे को. Sharat sir, please don't please don't take the Mickey out of this. But agar aap, I'm sure, and I've heard you long enough. You are siding the right side here. I'm not giving you any kind of clean shit. But what I'm trying to say is that there is information. If you want me to rattle through it, I can. But I don't want to take up 1,000 people's attention span of a goldfish as a part of this conversation. नहीं समझेंगे, or probably I will be wrong as well. There are much more bigger experts here. नहीं मैडम, बात ऐसा है ना, there are only two things in life, right and wrong. हम right का सहारा भूले नहीं, और wrong तो हमने कभी अपनाया नहीं. Starting from lot of promoters, including अनिल अंबानी, ठोक दिया उसको. ये तो अभी बूढ़ा हो गया, 65 साल, और क्या मगजमारी करे. ये तो इसके खुलेआम ठोकता था. क्या है अडानी में, क्या उखाड़ लेगा, क्यों डरने का उससे. He must be the richest man, but he is one of the most person with liability. Anyway, तो ये सब ठीक है, मजा आता है, सुनने को मिलता है. आप जैसा आदमी लोग से परिचय होता है. रोहित भाई हमारा दोस्त है, फैक्ट फाइंडर दोस्त है. सो एनीवे, चलिए आगे बढ़िए. मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं भी तो दोस्त हूँ. अरे लिया है. चलिए अभी किसका टर्न है. आप बोलो ना भाई, अनम्यूट करके बोलो फटाफट. But मैं एक चीज बताता हूँ. See, the only way we learn in the market is we speak to 4 people, we hear 4 things, and then we make up our minds. Not everything we hear is right or wrong. Now, this fundamental argument on Adani goes both ways. I spoke to at least a handful of analysts, and you all can correct me. The first reaction of people on the fundamental side was, ठीक है, जो भी है, Ambuja is a very good company, and it has this Ambuja तो ले लो ये भाव पे. And the second one people come out on is Adani Ports. Apart from that, yes, people are confused on many others, but they do come out, and so it is not a one-sided negative view also among heads of research which are in the community. So it leaves me confused. People have opposite opinions on this. And just so that I'm not confused, I have summarized my views in a couple of series of Twitter posts, which I've pinned here. It's there since 30th of January. People can go and see that. It was very easy to find out what has happened here. Rampant, share misappropriation as well as evaluation that has been done. And just looking at the nature of the business and the time in which it grew, one would have made the best guess of what has happened here. And it doesn't take someone very intelligent to kind of work out what's wrong. अरे मैन, शेयर बाजार में इतना स्टोरी है मेरे पास. वक्त मिले तो आना. अभी भी बहुत चलता है. ये तो अडानी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. छोड़िए बात को, चलिए. सर, हम लोग आर्मचेयर इन्वेस्टर्स हैं सर, सो गिव अस द बेनिफिट ऑफ डाउट. आपके जैसे वी हैवंट अर्नड आवर स्ट्राइप्स एज येट, सो आई वुडंट compete with you. Thank you. अरे माताजी, हम भी एकदम ऑर्डिनरी आदमी है. आधा चड्डी पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं. अब बात करूंगा, आपको बताऊंगा बहुत सारा चीज. एनीवे, चलिए भाई साहब, कौन है अभी. each Sushil ji, you want to share your thoughts? I'm really sorry, my brother. I just went out to pick up a matchbox from the kitchen, so I missed the last 2 minutes. Please pardon me. No specific question, just your thoughts. नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये दूसरे 2 स्पीकर लोग आए हैं, उनको बोलो. आप भाई बोलो, दिखता नहीं है मेरे. शरद भैया नमस्ते.
नमस्ते नमस्ते। ये अभी मैडम ने जो भी बोला ना पूरा सुना, बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना। गैम्बलिंग तो है, 100% है। अभी सिर्फ शरद भाई आपसे सुनना है। अब जो कॉमन पीपल है, ठीक है, 100% इन्वेस्टर है, सीप से भी लेते हैं, आदत लगाई है सीप की। और गए महीने में आपने भी चिल्ला चिल्ला के बोला था छोड़ो, अडानी को छोड़ो, नहीं छोड़ पाए। उनके लिए क्या पर्सनल, मैंने तो छोड़ दिया गए महीने में ही। आपने आपके स्पेस पे ही सुना और मैंने पूरा अडानी छोड़ दिया था। ये अभी हाँ बहुत लोग तो परेशान है। अब मेरे ग्रुप में ही मैं देखता हूँ ना, इतने लोग एवरेज करते जा रहे, पूछते, मैं नहीं बता सकता, बोला भाई मुझे नहीं समझता, छोड़ दो, मुझे नहीं समझता है। मेरे को भी नहीं समझता है। देख भाई, इंडिया इज अ फ्री कंट्री। एक बार मैं बोलूंगा कि मत कर, दोबारा बोलूंगा, फिर तीसरी बार नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा चढ़ जा और बोरिया बिस्तर लेके, मेरा क्या जाता है। बराबर है। हाउ एम आई वरिड, हाउ एम आई वरिड फॉर यू। आप मेरे को आप फीस दो तो मैं आपको संभालू। ये बात सही है। चलिए दूसरा इच। Hello, sir. This is Chetan here. May I speak? या प्लीज। Yes, sir. I've been listening to your spaces and I really enjoy it. This has been happening for around 3 months. Uh, Especially one of the things that I remember and was when you had injured your shoulder, and Sushil Kedia sir came on the spaces and told, Sharad bhai, आप अपना कंधा ठीक करो, बेयर्स का जनाजा उठाना है. So I took that hint and I went short, made a good amount of money as well. Thank you for that. And now I have two follow-up questions through your spaces. One is you were talking about some scam update. I don't know. You told ping me in January or February. So is there any update on that? And the second one is today there is a writ petition filed in the Supreme Court against short selling. They want to ban short selling. So what's your view on the same? Ban on short selling. Yes. No, I Yes, don't. No, it's no, a, no. I it's a don't writ. think there's a writ on short selling. It is they are basically two petitions. First petition is about banning any media discussion and stories on Adani Group, and the second is a PIL for doing an investigation into Hindenburg. Yes, but the prayer in the Chief Justice bench on the bench is to look into short selling, and the whoever that Mehta AG or SG Yeah, whatever his but you designation can't is, short sell in India. You can't short sell in India in any case. You can't do it. It's not possible. How do you do it? You have to borrow. No, you can Yeah, borrow but from NS. You can borrow from NSDL practically, and no, sell. it doesn't work, right? We know that. It doesn't work. It doesn't work. Yeah, you can also understand a few more things. The total shareholding in Adani Group as such was about 18%, which at 143 crore shares outstanding in the market, 18% of that brings it to around 20 crore shares. The delivery which has happened in the last 15-20 days since the report has come out is only about 2.5 crore shares. So practically they have only sold 10% of their holdings. So they don't really need, if ultimately looking at the situation and looking at how the responses are going, it looks like over a period of time there will be a complete exit from all Adani Group holdings. So now looking at that, they still have a lot of shares to sell. And there is a lot more in the story before that everything unfolds. So they don't need to borrow from anywhere. They have quite a lot of stock. If all that stock comes into the market, the shares will just not hold. So anyone who's averaging at the moment, God, all the best. May God help you. But नहीं पर जो ये टोटल का होल्डिंग है, टोटल फ्रांस, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है पूरा। वो लोग थोड़ी बेचेगा पूरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, वो तो FII के पास में 20 करोड़ शेयर है मोटा मोटी, उसमें से 2.5 करोड़ शेयर उतरा है डिलीवरी में अभी तक, उतना ही। But Anand, those FIIs itself, you know what those FIIs are, right? क्या? I have no idea. I'm just going by a general figure.
And this general number itself is too big to still left the holding left in hand. Okay, so let me just explain again. The reason why MSCI cut the weight was because they went through each of the details of the FIIs and they came to a conclusion that there was something very weird about it, which is why they went ahead and cut the weight. If they were not convinced, they wouldn't have cut the weight. They also were convinced that an MSA wouldn't have taken the decision because they would have approached the company Adani Group and said, listen, please explain this to us. And those guys wouldn't have been able to explain. So as a result of which they would have said, listen, there is just too much of evidence and our circumstantial evidence indicates this way. This is the reason why they're going ahead and cutting the weight. Fair enough, fair enough. And this is going to prompt a much more dilution from the FIs over the days to come. You see, ultimately, they are answerable to their investors. चलिए, thank you so much. PAT something. बोलिए, बोलिए ना भाई सर. Sir, Nilesh here. Can I come in? Yes, yes. Sir, two things I wanted to highlight. एक अपना तो जो धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को मिला, that was quoted 2 times higher than DLF, and there was no other bidder on this धारावी project. So that highlighted me कि बॉम्बे में इतना सारा बिल्डर है, एक ही जन को क्यों मिल रहा है? That was point number 1. And second thing, I also belong from Mundra. Mundra is my native place. I'm from Kutch. So once, some 3 or 4 months back, I'd gone for a registration. Now that registration office, property registration office was sponsored by Adani. तो ऑफिस का आप हालत देखो ना, इतना घटिया हालत है. मीन्स यहाँ पे एक गरीब लोग का झोपड़ी रहता है ना, वो टाइप का सर कंडीशन है. So I was always having a suspicious on this group. कि कुछ तो गड़बड़ है. And the way I was using, I was seeing the price pattern. जो हिसाब से it was included in the FNO, and from 2000 it went up to 4000, and from 38 to 4100 or 4200 there was continuously एक बैंड में रह के उसको सप्लाई कर रहे थे. So there was always a observation out there that कुछ तो गड़बड़ है सर इसमें. And then we had all the events coming in. So whatever Palak said, I think he should diagnose the other part of the story also. कि भाई अडानी अच्छा है, ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, all good, all well said. But other part of story क्या है? So that was only one-sided conversation from Tulsian and from Palak. I totally disagree for the same. आप फेयर वैल्यू का डिस्कशन रखो अगर आपको स्पेस रखना है, या आप अंदर अंदर ही 3 जन बात कर लो ना. स्पेस रखने का क्या जरूरत है? 3 जन अंदर अंदर ही बात कर लो. बाकी वैल्यूएशन हैज इट्स ओन फेयर प्ले. अगर कोई स्टॉक 4000 जाता है तो नीचे भी आता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम. उसमें नुकसान हो गया, ये हो गया. 52 वीक लो 1500 का था इसका. हाँ सर, मैं नाम नहीं बोल. प्राइस का. हाँ, पलक बोल रहा था. पलक बोल रहा था क्या हमारे देश का नुकसान हो गया, ये हो गया. इट्स ऑल ऑन पेपर यार. क्या नुकसान हो गया? इट्स ऑल ऑन पेपर. It's all on paper. And there are so many MPs from both Congress and BJP who are having shady books. आप उनको भी interrogate करो ना. आप उनको भी interrogate करो ना. Why only the opposition parties? From BJP itself,
there are many shady MPs, and to be honest, Loda Builders is one of the most shadiest person. कि कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे बच्चे का लॉस हुआ है. इंटरोगेट करो ना. कोई पूछता नहीं है क्यों, कि वो बाप का पैसा है. चलिए निखिल भाई. I'll tell you an angle on this. When prices go up, okay, or they go up a lot, as they did in the case of Adani, or the valuation is very high, we are all happy to say that it is manipulated on the way up. Somebody is in control. But when prices come down, we don't want to say the same. That's all the argument was. It's nothing more than that. Rohit, just to add to that, there was only one buyer in the stock, okay, and that was LIC. If you look at the shareholding, even retail sold. Over the last 2 years in Adani Enterprises, the retail share fell down. Okay, so only one guy bought, LIC, period. No, that's okay. Fact finder who was buyer and seller, that's okay. There's no problem as such. But when we have a debate or when we have a space, there should be a fair amount of discussion from all sides, from all angles. हम लोग खाली तेजी का बात करेंगे या मंदी का बात करेंगे ऐसा नहीं होता है ना. मेरा व्यू बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है. I can counter Sharad bhai also, I can counter Sushil bhai also. Like you have a bull and bear counter, you should have a case where you have a bull and bear case for Adani itself. So I heard Palak saying every Gaga on Adani. I heard Tulsian saying everything Gaga on Adani. That was not true itself. तो आप मार्केट ही डिस्कस कर लो, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ से बहुत तेजी लगता है. बोलो, यू अग्री? Not at all. हाँ, तो बस वही है ना. Nobody in this group agrees. Nobody in this group agrees, and that is the problem. But that is the problem. At some point of time, you will also change your view, Rohit. नहीं. तो वही तो पॉइंट है कि you are allowed to have opinion. नहीं रोहित भाई, आपने जो पूछा ना बाजार का, वो फॉरवर्ड है. ओके, ये जो डिस्कशन हो रहा है ना अडानी का, वो बैकवर्ड है. Yeah. We can disagree. आपको तेजी लगता है, मेरे को तेजी लगता है, मंदी लगता है. नहीं, I was only saying because he's saying कि it was one-sided opinion. I'm saying we are only giving our opinion. Opinions can always be different. What is that? But I'm saying, Rohit, have a fair value to speak and question everybody ना. आप लोगों ने 2 जन को बुल केस क्यों बुलाया? सब लोग को बुलाओ ना. I'm saying that only. Where I didn't say. चलिए ये बात को छोड़ देते इधर. या अरमित. जी सर. थैंक्स सो मच. I'm normally very quiet because मैं तो अभी भी समझ रहा हूँ कोई चीज़ है, and I don't consider myself too knowledgeable to comment too much, but this has really got my goose and I'm a little pissed off because with all due respect to Rohit sir, and absolutely respect your point of view, and I think it requires guts to even get such people out and face the flak like you are, which is not very fair. But what kind of a economy or a country we're trying to become? We want to become a $5 trillion dollar economy. We want to become a superpower, and we can't take one blow in the chin in the face just because some short seller or whatever the Hindenburg is, and I respect their research. अगर उसने हमको कुछ point out किया है, there is something institutionally fundamentally wrong with an organization, institution in our country. Our response is what? That this is nationalistic and we're supposed to be something is wrong with them. If we are better, then come out with a mature response. Show them that look, if this is your opinion, you respond in a much better and in a much more mature manner with facts. What kind of conversation are we going down here where the best response to some criticism like this is crying like a baby and just going to mama papa and complaining, इसने ऐसा बोला. I mean, how is this a sign of any mature economy? This is completely agree with you. Going backwards. Completely agree with you. This is reflective of not just. I'm sorry. Just this is not just reflective of our mature economy. This is becoming reflective, and this is becoming endemic in every institution in our country.
There is no conversation of any innovation. There is no conversation of any kind of technology being developed. Our education system is taking, just because there is some ho-ha and gung-ho about being nationalistic all the fucking time, this is going to impact so many of us in the future who want this country to progress and go forward. So I'm sorry, I'm just cribbing, but this it's sad where we are right now. We should not be having this conversation about, you know, country ke liye aisa kar diya, ya someone like Palak and anybody having this conversation. The conversation would be, how can this be better? Even if you fail, how can we fail better? So I don't know, how do you guys Out of look what at you this? said, Harmit, out of what you said, what really moves me is innovation. Exactly. There is, Prasharata, there is absolutely zero focus, talk, No, but you are conversation. wrong. But Harmit, you are wrong. Okay, how sir? How is it? Because in innovation, we have innovated how to prepare balance sheets, how to forge Yeah, documents. X of X of this, X of that, and we are very profitable. Yeah, I know. Yes. But the way forward is innovation only in real sense. Correct. Otherwise, we'll be in dumps always and Right, having such conversations always. right, sir. Right, sir. I'll rest Anything my else, no. Harmit? I'll rest my case, sir. Thanks. Thank you. Yes, please. PAT something. सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग Good evening. सर वॉन्डरिंग वन किया सर बोलिए बोलिए. सर मेरा सर दो चार क्वेश्चन है सर अगर इजाजत हो तो पूछूंगा सर पूछ लो. सर पहली तो सर मैं आई डोंट वांट टू कनेक्ट दिस विद पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ कोर्स द अपोजिशन ऑफ दिस कंट्री has every right to bring issues, so they have their right, so they have their right and they have their agenda, so I just want to dissect that. And मेरा सर क्वेश्चन ये है कि सर manipulation of stock always happens. Like I remember sir, like last April when that HDFC ka merger news came, I think NSE mein it was just filed about few minutes before the stock market opened on Monday, and there were so many insiders who were actually already in know of that, and they had already made positions, and जैसे Monday open हुआ था and it ran and 1700 touch किया and people got stuck there. There was a upper circuit that day, I remember. So that is also a sort of manipulation. अभी stock market में क्या हर आदमी को उसके लिए क्या we will, is there any law for that? There is no law for that. So I really don't know why उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं. Second thing sir, मुझे याद है सर जब किंगफिशर मालिया जी का टाइम पे किंगफिशर का वो जो डिफॉल्ट हुआ था, जो किंगफिशर का जो ब्रांड नेम है, किंगफिशर एयरलाइंस का ब्रांड नेम है, उसको भी एज अ कोलेटरल यूज करके बैंक्स ने लोन दिया था उस समय. सो इस बार भी क्या अदानी के साथ, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ सब्सटेंस, इस बार भी क्या अदानी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या कि अदानी हैज यूज्ड दिस ब्रांड नेम एज अ कोलेटरल एंड बैंक्स हैव गिवन लोन अगेंस्ट दैट, और truly whatever loans the banks have given to Adani, do they have proper security collateral for that to cover up for that, or it is not sufficient? So these are the questions which need to be really answered. And third thing sir, so much of broha is being created, but I want to know what are the legal framework or the laws or the sections which Adani has violated, and they can actually be prosecuted for that if they have done that, because sir, that is what how it is. And I am not sir, I am not trying to I'm not trying to support Adani, or and I'm not trying to support anybody. If somebody is wrong, they should go to jail, but the process of law and everything should be followed. And of course we should have spaces like this where such manipulation and high value जहाँ 800 900 PE हो जाता है, तो people should know that, so that people at least don't invest. If Adani was at the 200 rupees, if they bought it and if they exit at 4,000, that is good. But they should not come and invest at 4,000 expecting it to go to 10,000. So these kind of discussions are very good, and it will at least common man will at least know how to do his investments. So that's a very good thing, sir. That's all I want to say, sir. Thank you. Thank you. Thank you.
You And need by an bringing, under. by bringing up Kingfisher, you have also opened up a Pandora's box, which is that India is the only place where borrowing money for businesses, you cannot, and if your business fails, then it is against the law. So, fortunately, you have a bankruptcy code now, and I hope it's not illegal to go bankrupt anymore. But that's just the story. So I completely never understood the Kingfisher story. What did he violate or what law? I've never tried to study it. But the fact that if you borrow money and go bankrupt and you have to run out of the country is a sad enough story to remember. Chaliye, who's next? Yeah, Prakash. Hello. Praveen. Yeah. Sorry. Yeah. Earlier, I was in Rohit's space. I must say it was a ridiculous space because, like, why you want to fall cry on somebody Hindenburg? I have two things to say. One crook was doing some crooked things, and the other crook is trying to loot the business. So it's nothing to do with India, guys. Nothing to do with India. But India has to learn two things from this: do not put everything in one person's hands. Do not do the monopoly, because if these giant businesses screw up, that's going to affect the country. That's what we need to learn, India. Number one. Number two is the other thing we need to learn is how we cannot repeat this. How can we strengthen our regulatory agencies? Those are the two things. Don't. The entire world is looking at this, and this is so silly. This is not attack on India. This is one crook attack the other crook, and don't picturize it. It's silly and it's sounding. I mean, I spoke to a couple of friends. I mean, my American friends. They're asking like, this is something to do with the business. Why you guys are taking it personally? The same company did the same things here too. I mean, that's what they encash it. It's legal, illegal, this, that. That's another matter. That's another thing, because there are always people who are ready to steal money from the corporates, and the corporates does the same thing. We need to learn lessons instead of blaming Hindenburg did it. Opposition did it. Yes, opposition. If BJP would have there in Congress's situation, they would have done the same thing. They would have done like 100 folds more than what the current opposition is doing. So instead of all the silly talk, can you guys please focus? What can we learn from this fiasco? What can we do? That's my 2 cents. That's it. Thank you. No, so you say that it was a fiasco, right? Yes, Praveen? yes. It's So it's it it's was a it, fiasco. it, it's a fiasco. It's a fiasco because we put everything. We started putting everything in one person's hands, from ports to everything, and that's a mess. If one guy screws up, everything will get screwed up. That's a lesson. Do not do that. No, Do not do that. no, That's Praveen. uh-huh. Praveen, Yes. if everything is entrusted to one person, it's okay. But putting strategic assets like ports, airports, roadways into one entity, he can take the country to ransom. I used to watch movies in early 70s and all that, that somebody would do this, that, and overtake the government. Like I don't remember exactly, but it is very much possible to. He has all the strategic assets. Air Force would be under his control at one point of time. Roadways are under him. Ports are under him. Airports, name it. Thermal power plants, your Mumbai power. Yeah. Yep. I mean, even media houses too. I mean, that guy can. I mean, it's just it's not about the party affiliation or anything,
But think, guys, think with your mind. I mean, I know there are some people hate BJP. BJP comes, Congress comes, but think strategic assets in one person hands, and the guy holds media as well. Only two people, two or three. I mean, is it really a country? I mean, what are we thinking? Like we are like, oh, opposition did it, Rahul Gandhi did it, this that. That's silly. Like think with your mind. Think with your mind. Modi is there, Rahul Gandhi is there. Tomorrow they won't be there. Like, what are you gonna do? This is oligarchy. This is wow how Russia got screwed up. Russia got screwed up exactly like this. This is oligarchy. I mean, please do not encourage these kind of people. I mean, spread the business to, encourage, there are so many unicorns in India. India is a vibrant country. They are doing great. But instead of encouraging Ambani, Adani, all these people, encourage like somebody new, somebody that has some different ideas. Okay. That Vision, innovation. innovation. Yes. Innovation. Adani, what did he And innovate though? That's silly. and Praveen, in 2 lines about yourself. Oh, I'm into pharmaceutical business. I'm in the US for the last 20 years. I did my master's and everything here. Then I was on a visa for some time. Then I'm a pharmacist actually, but I opened my own, clinical pharmacy, compounding pharmacy businesses. I'm in Florida. I have multiple locations here, um, all Okay, independently owned. Me and a couple of partners. So that's what I do. that's great. Thank you. Thank you so much, Thank you. for being with us. Thank you. Thanks. Bye. Amit bhai, बोलिए ना. Sir, I've got Sir, to can I just speak? Yes, sorry to yes. Okay, okay. interrupt. I just got to disappear in like 2 minutes. I've got a meeting starting. I just wanted to say, just to sum up, that what you were saying there is absolutely right. I do feel that I hope they don't do this patchwork job of introducing another set of rules and other things that they've got to follow. But we need to really look at this as a there are some seminal issues that have come up in Hindenburg or not, in terms of the way we are kind of trading and the kind of leeway that we are giving to family owned businesses, and the general lack of transparency that exists. So I do feel that there is this whole change in mindset that we need to bring about in the way, if we are to be recognized going forward. SEBI has some excellent rules, but it has been a result of patchwork from several years on, and none of them seem to be effective in the face of this. And also, the major important point that you raised was the national security issue, and I think that it needs to be investigated. My lips are pursed at the moment. I can't be saying more, because then I will be raising fingers without without guilt being proven here, and you're not guilty till you're kind of proven at this stage. So I do feel that there are no sinister motives behind all of this, and that could be really damning in terms of the source of funds that have come in, and the over leveraged kind of situation that we are seeing here. Where are the sources of those funds coming from, and who is really interested in damning the DNA and the fabric of this country? So I'll leave it at that. It is a bigger issue. It's not to be seen between this political faction and that political faction. If you really believe in the idea of India, you should really let this be investigated, and let the things come out to open. We are not trying to quash any business or a businessman who is trying to do good for India, but the facts are telling otherwise, and that is what needs to be investigated. Thank you all. Thank you for the space, and thank you for the opportunity to speak as well, Sharad sir. Thank you. Thank you. Thank you. Hamid bhai, बोलिए. Sir, let first fact finder speak because he's been raising his hand. No, Fact finder भाई बोल देगा उसके बाद मैं thanks, बोलता हूँ sir. Amit ji. I'm just actually wanted to just say good night because I have a football match tomorrow. And just one point I wanted to make. First, I think, and I don't have any. I have a bipart. I don't have follow any political party, but just let me make it clear. I think the Congress and opposition are so dumb. They are so dumb because if they really wanted to screw the current government,
they would have brought about and only spoken about the biggest financial fraud in history of India, which is LIC transferring 3.5 lakh crores of money from the policy holders of LIC to the government of India. That was daylight robbery, according to me. That is the only thing they should talk about. But unfortunately, they are so dumb, they don't want to talk about it. Good night. All right. Amit bhai. सर तो फैक्ट फाइंडर भैया को फैक्ट फाइंडर जस्ट रिमेन हियर फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स। तो फैक्ट फाइंडर भैया को हम लोग क्यों ना रिप्रेजेंट कर दें कि भैया आप पूरा अपोजिशन को सजेशन का एक आप उनके कंसल्टेंट बन जाओ। दैट वुड गिव यू मच मोर बिगर मनी। just on a lighter note, nothing No, more sir. than that. Don't feel bad about I'm just being a citizen, sir. That's all I'm being. Just a citizen. it. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शरद सर आई एम वेरी मच अपोलाइज। मैं सॉरी बोल सकता हूँ आपको। आपका व्यू एकदम सही गया अडानी के लिए, मेरा व्यू एकदम गलत गया अडानी के लिए। अरे छोड़ना यार, मेरा तो व्यू रोज गलत जाता है। अरे नहीं सर, मेरा व्यू गलत गया। लोगों ने बोला कि शरद सर के आप मेरे स्पेस में आए थे तो मैंने बोला था कि सर मुझे नहीं लगता, मैं गलत गया उसमें। सर मार्केट है, गलत भी जाएंगे सही भी जाएंगे। पैसा कितना लूज किया लास्ट में वो मैटर करता है। मैंने पैसा लूज किया, पक्का लूज किया। मैं नहीं बोलता मैंने लॉस नहीं किया, पब्लिक फोरम में बोल के जा रहा हूँ रिकॉर्डेड स्पेसेस से। तो लॉस किया उससे फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक ही चीज है, क्या लोन लेना गलत काम है अगर कोई कंपनी बड़ा प्रोजेक्ट बना रही उसके लिए? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, शरद सर आपसे क्वेश्चन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही कोई इंडिया का। तो जो भी नॉर्म्स है, स्टेटेड नॉर्म्स है, उसमें लेवे तो वांदा ही नहीं है ना, उल्टा लेना ही चाहिए। तो सर हर बैंक का नॉर्म्स रहेगा, हर बैंक का लास्ट में आरबीआई ऑडिट करता ही है, हर एनबीएफसी को ऑडिट हुआ जाता है। तो क्या आरबीआई ने ऑडिट ने करके वो पॉइंट देखे होंगे? जी सर प्लीज। ये अमित, ये बात ऐसा है ना, यहाँ पर तो ठीक है जो भी हुआ, ओवरसीज में तो पीएसयू से बहुत पैसा उठाया, वो बात है। सर वो भी अगर उनके नॉर्म्स में बैठेगा तो पैसा देगा ना कि सर चलते फिरते आपको, मुझे तो पैसा कोई ना देगा। अरे वो रसल खेमा वगैरह में बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए उतना पैसा मिलता है, वो कोई भी कबाड़ी को मिलता है। ये चलता है अभी। अपने क्या अमित भाई, अपने क्या कर सकते हैं? अपन आपस में बात करके आर्ग्यू कर लेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज सब कुछ होता है। सर अच्छा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अपन बोलते हैं कि अडानी क्योंकि टॉपिक ही अडानी का, तो अडानी की बात करते हैं। जब उसका कॉर्नर्ड मार्केट है, मार्केट एक कॉर्नर्ड उसके पास पड़ा है सारा शेयर होल्डिंग, कोई शॉर्ट करेगा तो शॉर्ट करने के लिए तो भाई माल तो इसके पास पड़ा है, कैश डिलीवरी सारी इसके पास पड़ी है, कोई एफएनओ में पक्का कर सकता है, बड़ा पोजीशन बना सकता है। जो मैं रोहित का सुन रहा था ना, उसमें मुझे भी वो क्वेश्चन था कि वो वहां पे प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे, आके शॉर्ट मार देंगे। भैया लास्ट में आपको मार्केट हिलाना पड़ेगा ना सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आपको कैश में भी ट्रेड करना पड़ेगा, आपको एफएनओ में ट्रेड करना पड़ेगा। कैश का होल्डिंग जब हम बोलते हैं कि उसने पूरा कॉर्नर्ड मार्केट रखा है। एफएनओ की सिंपल बात करते हैं, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट, बड़ा दो कंपनी, एसीसी अंबुजा, दूसरा दो छोटी कंपनी जो वो खरीद के गया 70% होल्डिंग, जो भी XYZ रहेगा। तो सर ऐसे मार्केट को कैसे कोई शॉर्ट कर देगा अगर उसका खुद का परमिशन ना होगा? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? सर उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वापस, कैसे नहीं हो सकता खुद ने ही किया हो ये सारा? मैं अब बताओ सर, मैं इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप वेटरन हो, आपसे सीखने को मिलता है सर, इसके लिए आपसे पूछता हूँ मैं। ये जो अपने इंडियन बग है, उसने न्यूयॉर्क में बॉन्ड्स बेचे, ओके, उसने कोई शेयर वेयर बेचा नहीं। इधर ये जो अलग गुल्ला हुआ, 15 लाख का डिलीवरी था। फिर दूसरे तीसरे दिन पे बड़ा बड़ा डिलीवरी, 60 लाख 50 लाख, और बी ग्रुप में पता नहीं क्या। वो माल लैंडर लोग ने बेचा,
ये जो बोलते हैं ना कि इसने लोन भर दिया समथिंग 8,000 करोड़ या कुछ ऐसा वैसा फिगर, तो वो लोन नहीं भरा है उसने, वो बैंकों ने उसका माल फोड़ दिया। बैंक मतलब लेंडरों ने उनका माल फोड़ दिया, तो अभी सिस्टम में माल घुस गया। ये सिंपल सा बात है अमित, इसमें डिलीवरी होता ही नहीं था, 1,00,000-2,00,000 होता था मुश्किल से, तो ये अभी 30-40 लाख होने लग गया। अभी माल वो सिस्टम में आ गया भाई। पर सर फिर लास्ट में कोई तो बायर रहेगा ना, है ना रिटेल। तू अभी आया, पहले एक दो जन बोल के गए कि एवरेजिंग जोर में चालू ही है सबका। तो इस हिसाब से सर तो ये वापस ये यस बैंक, सुजलॉन, यूनिटेक कुछ भी बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड, आज नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद। वी अग्री टू अग्री। पार्डन सर? वी अग्री टू अग्री। ओके, बट सर वापस जो लास्ट में इसका मैं सिंपल एंटरप्राइज की बात करूं या जो मैं F&O स्टॉक ट्रैक कर रहा हूं उनके, वो स्टॉक वापस 100% बढ़ गया। अडानी पोर्ट ऑलमोस्ट आज फ्लैट क्लोज हुआ बट नीचे से वापस ऊपर आ गया, तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? मतलब मुझे माइंडसेट चाहिए होता है कि ये सबको सबके सबके पास सब न्यूज है, जो आपके पास न्यूज है वो मेरे पास न्यूज है, बट ये क्या कारण हो गया कि इतना राइज आ गया? नहीं, अगर तू DHFL, यस बैंक, वो सब याद करेगा ना, अभी का बात है, ओके, 3-4 साल पहले का, नीचे जाता है फिर डबल हो जाता है, फिर वो घूमते रहता है, फिर नीचे जाता है फिर डबल है। सो ये मूवमेंट चालू रहेगा। बट सर मैं DHFL का तो केस मैं सिंपल बोलता हूँ कि जब वो प्रमोटर साहब आए थे ना, वाधवा साहब, टीवी पर CNBC TV 18 पे उन्होंने आके बोला था, सर मेरा आज भी वो ट्वीट रहेगा, मेरे पास आज भी पड़ा है, मैं बोला प्रमोटर झूठा है, इसका कुछ ना होना, क्योंकि सर मैं चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूँ ना, तो चार्ट पैटर्न मुझे भी कहीं जो आप बोल रहे हो ना फैक्ट वही दिखता है। बट सर DHFL एक फाइनेंस कंपनी थी, यहाँ पर आके अपने पास हार्डकोर एसेट्स, सर हार्डकोर एसेट्स है उसके पास, तो क्या हार्डकोर एसेट की वैल्यू एक फाइनेंस कंपनी के हिसाब से करनी चाहिए या सत्यम के राजू के हिसाब से करनी चाहिए या किस तरीके से करनी चाहिए कि लास्ट में मैंने एक ट्वीट डाला था कि पोर्ट्स होते हैं ना, वो कंपनी का भी 6 या 8 या 10 ही होना चाहिए, उतना वैल्यूएशन आ जाएगा। बट मैं वापस वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसके पास हार्डकोर एसेट्स पड़ी जिनका वैल्यू इतना है आज के टाइम पर, अगर वो वैल्यू टू वैल्यू भी बेचा जाए, मतलब अगर फॉर एग्जांपल उस पोर्ट का वैल्यू 100 रुपया रहेगा, 100 का 100 पे भी बेचा उसने, तो सर आज का अगर उसका वैल्यू, उस कंपनी का वैल्यू 50 आ गया, तो क्या वो डिस्काउंटेड नहीं चल रही? क्योंकि सर कोई भी बैंक लोन देती है ना, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे देती है कि भैया फ्यूचर में क्या कंपनी कमाएगी, क्या उसके पोर्ट पर माल आएगा, या विलमार है फॉर एग्जाम्पल जो तेल बेचेगा, खाने के प्रोडक्ट बेचेगा, आटा बेचेगा, फलाना ढिकड़ा बेचेगा, या कोई ट्रांसमिशन कंपनी कितना इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा, या हाइड्रोजन का कुछ आ गया कि भैया आप गाड़ी को पेट्रोल की जगह पानी पे हाइड्रोजन पे चला लो। भगवान वाली क्या करेगा सर, टेक्नोलॉजी तो मुझे भी इतना नहीं समझ में आता, तो मैं उस एस्पेक्ट में घुस भी नहीं सकता, बट जो हार्डकोर एसेट्स है सर, हार्डकोर एसेट है। आज अपन जियो की बात करें, जियो के पास हार्डकोर एसेट्स पड़ी है, जियो के पास भी लोन था, जियो ने अपना सारा माल बेच दिया, जब अपन घर में बैठे थे लॉकडाउन में तो मुकेश भाई सारा माल बेचते थे। अभी तो इसके पास 75% होल्डिंग अपन मोटा मोटी पकड़ लेते सब कंपनी में, ठीक है, कोई एग्जैक्ट बोलेगा 69 ये है, अपन सब में 75 पकड़ लेते, तो माल तो ये भी अपना कभी बेच सकता है, लोन रिपे करना पड़ेगा तो लोन रिपे कर सकता है। तो सर हार्डकोर एसेट की वैल्यू पकड़ के जाए कि इसको किस तरीके से वैल्यू किया जाए, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन पार्ट पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और पोर्ट्स 10 टाइम में बिक जाएगा, वो कोई भी ले लेगा,
ये एंटरप्राइज का वैल्यूएशन समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं एयरपोर्ट का वैल्यूएशन 2.5 लाख में, वो सब कुछ उसका वो सेंस नहीं पड़ता है। तो पोर्ट मेरे को लगता है 600 है, 400 होएगा, 500 होएगा, 700 होएगा, ये घूमता ही रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। आ रहा है आवाज? सर आवाज आ रहा है आपका? हेलो। सर ऑडिबल तो हो आप? ऑडिबल हो सर, प्लीज कैरी ऑन। ये प्रोसेस को 2.5 साल लगेगा, दूध का दूध, पानी का पानी, तब तक चलता रहेगा। 1000 होएगा, 1500 होएगा, 800 होएगा, 1500 होएगा, चलता रहेगा ये। इन शॉर्ट इज्जत चली गई। अब सर तो बोलो। एक उल्टा सर तो एक उल्टा केस में पकड़ूं, इसको अगर वापस गुडविल बनानी है अपनी, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? अगर इसको वापस अपना वापस वर्ल्ड में गुडविल बनानी है कि भैया मैं हूँ, सब कुछ हूँ, मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, तो क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक ही चीज, और इसका रोड मैप क्या होना चाहिए? जी एक सर। ही चीज जो हाइंडलबर्ग ने रिपोर्ट निकाला, उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे दे, खत्म, चैप्टर ओवर। सर तो यूएस में उसने कोई बेस्ट लॉयर हायर किया है, जहां तक आज की न्यूज थी, तो रिप्लाई करने को गया ना यूएस कोर्ट में भी, क्योंकि यूएस कोर्ट तो पक्का डॉक्यूमेंट्स मांगेगी सर। यूएस कोर्ट ऐसे तो इसको छोड़ नहीं देगी अगर उसने सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए। आपने पूछा कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो क्या करता, मैं सब कुछ बता देता, जो भी है राइट रॉन्ग, and everybody appreciates a clean man, nobody appreciates a unclean man। इसको तो एक ही चीज करना चाहिए, कम क्लीन। ये मेरी सोच है अमित। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पॉइंट सर। मतलब अभी जो उसने यूएस में कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, जिस भी लॉयर के थ्रू जा रहा है, अगर वहां ये अपना केस प्रूव कर दे तो वापस इसकी इज्जत आ जाएगी आपके हिसाब से? क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीज। नहीं आएगी। जी सर, फिर भी नहीं आएगी? नहीं, जब तक वो खुद नहीं बोलता है, नहीं बोलता है ये सच है, ये रॉन्ग है, ये सच है, ये रॉन्ग है, तो ये कोर्ट केस तो चलता रहेगा, अच्छे में रॉन्ग निकलेंगे। तो सर इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट जी नहीं बोल। नहीं सर, तो आपके हिसाब से मैं एज ए लेमैन पूछता हूँ, जितने लिसनर्स हैं उनके लिए पूछता हूँ, भैया एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल अडानी को हाथ मत लगाओ सर, करेक्ट? थोड़ा दूर रहो। इंडिया में 5,000 और स्टॉक लिस्टेड है, उनपे देखो। यहाँ पे प्योर गैम्बलिंग चला रहेगा, स्पेकुलेशन चला रहेगा, एंड मार्केट इज मेंट फॉर स्पेकुलेशन। तो इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रह जाओ इफ यू आर इमेच्योर ट्रेडर। शरद सर 40 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे शायद 20 का है, तो हम थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट ये रहेगा, इन स्टॉक से थोड़ा दूर रहो, कोई ना एवरेजिंग करो ना कुछ सोचो। जी सर। मेरा 75 साल का भी एक्सपीरियंस होता है, तो ये वोलेटिलिटी में एक दिन पैसा लगेगा, 2 दिन आएगा, 1 दिन लगेगा, जीरो, इसमें मतलब नहीं। सो इफ यू अगर माँ बाप ने थोड़ा कुछ सिखाया है आपको, तो ये स्क्रिप्ट में अभी मत कीजिए, आपका पैसा बच जाएगा, उतना मैं बोलता हूँ।
अमित बोलो। सर सेम व्यू मेरा ही है कि भैया अगर आप नए ट्रेडर हो, दूर रहो इनसे। आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो दूर रहो। आप कुछ भी करते हो तो एटलीस्ट इस ग्रुप से थोड़ा एटलीस्ट 1 साल के लिए बाहर बैठ जाओ। जो भी आएगा नेक्स्ट 6 महीने से 8 महीने में, 6, 9, 12 महीने में आ जाएगा। क्लैरिटी आ जाएगी कि ग्रुप क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप इमेच्योर ट्रेडर्स हो, पक्का इस ग्रुप में तो हाथ मत लगाओ। बाकी 5,000 स्टॉक और है बीएससी में, एनएससी में 2,000 स्टॉक और है, उनमें जाके कर लो ना। 10 स्टॉक छोड़ दो, लिस्ट से निकाल दो अपना। शरद सर सही बोल रहे हो ना, जो आपने बोला वही रिट्रीट कर लो। इन चीजों में मत गिरो। इन चीजों में शरद सर बोले ना 2 बार, मैं बोलता हूँ 4 बार पैसा कमाओगे, 1 बार पैसा कमाओगे। इनसे दूर रहो। आपको ट्रेड ही नहीं करना है कि उसको ट्रेड कैसे करते हैं। शरद सर ने तो एडीजी की बात करी, मैंने भी एडीजी ट्रेड किया मेरे आंखों के सामने। 2007 में सर हम एडीजी ट्रेड करते थे ना, तो हमारा सिंपल होता था कि बीटीएसटी क्या मानना है, एडीजी ग्रुप का कोई स्टॉक ले लो, जिंदल का कोई स्टॉक ले लो, अगले दिन पक्का सुबह ऊपर मिलेगा। जब गिनना शुरू हुए तो सिंपल होता था एसटीबीटी मार दे, कोई भी स्टॉक पकड़, अकड़ बकड़ बम्बे बोल करके सबको शॉर्ट मार, जो एफ एंड ओ का स्टॉक होता पक्का पैसा मिलता था। तो उसी फेज में ये स्टॉक आ चुके हैं, जहाँ अकड़ बकड़ बम्बे बोल करो, कल कौन सा गिरेगा, कोई गिर जाएगा, गिरने के बाद वापस उठ जाएगा। आप अगर इमेच्योर हो, नए ट्रेडर्स हो, तो शरद सर के बिहाफ पे भी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनसे दूर रहो। अभी पैसा बनने के चांसेस कम है, गवाने के चांसेस ज्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड में ज्यादा है। तो अपने को ट्रेड ही करना ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो ना। इसमें जैसा बिटकॉइन के लिए शरद सर बोलते थे, और इतने सारे लोगों का अपने को ना समझ में आया उस फील्ड में क्यों घुसने का। बिटकॉइन 65,000 का 20,000 आ गया, वैसा ही अडानी 4200 का 1,800 आ गया। तो इसमें क्यों जाना है अपने को। आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो तो एसआईपीस करना शुरू करना। अगर आपको लगता है कि भैया मेरा स्टडी बहुत अच्छा है, उसमें कैपिटल ही उतना डालो कि अगर वो लॉस हो जाए, पूरा लॉस भी हो जाए, जैसे आरकॉम निफ्टी का स्टॉक था, एडीजी के सारे स्टॉक निफ्टी में थे, ठीक है, वो सब कचरा हो गए। सर एक एक व्यू पूछो आपको एक स्टॉक के लिए, वोडाफोन, उसके पास भी इतना सारा लोन खड़ा है, कभी हम वोडाफोन की बात नहीं करते सर। वो ऐसा ही चलता रहेगा, पैसा कमाने को रहेगा, सबका मतलब। चलिए, ये दो स्पीकर है, बाद में की पूरी है। अब बोलिए, नहीं डी बोलिए, म्यूट कीजिएगा। लक्ष्मी प्रसाद देश प्रेमी कोई तो लोग नहीं है, तो चलिए बंद करते हैं।